नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू किस्मत कनेक्शन। आज का ये वीडियो स्पेशली गुरु पुष्य नक्षत्र के लिए है। दैट इज हैपनिंग टुमारो, October 24th 2024. So this particular nakshatra is considered very auspicious for many things like purchasing gold and silver. ऐसी मान्यता है कि उस दिन जो परचेज किया हुआ गोल्ड सिल्वर वगैरह है, that gets multiplied. So, you know, I would recommend कि अगर if you can't afford gold, then at least buy 1 gram of silver or 5 gram of silver. That also very auspicious. पुष्य नक्षत्र स्टार्ट हो रहा है कल टुमारो 24th अक्टूबर को एट 11:45 AM, सो 11:45 सुबह। और ये एंड होगा 25th अक्टूबर 2024 12:30 दोपहर में, सो 12:31 PM on 25th October. Best time for purchasing the gold, silver, वगैरह is 12:30 PM to 1:30 PM. There are other timings as well, but this is the best. Uh, if you are so this particular timing 12:30 to 1:30 is for India. If you are abroad in US, UK, or Europe or Australia, then you have to look at the local calendar for the Chogadiya जो आता है ना, Chogadiya Murat. You can use the Greek calendar. जैसे कि मैंने बोला कि गोल्ड सिल्वर के लिए दिस इज द बेस्ट डे टू बाय. Other things you can buy is iron, books, clothes, as well as you can do substantial investment in property or stock market as well. But with the stock market, there is always a you know plus and minus sign in stock market. But any other investments that is long term is always beneficial. Now, one of the remedy or rituals we highly recommend is uh, uh, you take a plate, avoid steel metal plate, but you can have copper or brass plate, और यू कैन ऑल्सो हैव द क्ले की जो मिट्टी की बनाई हुई है ना, वो भी आप ले सकते हो. वो प्लेट में आपको श्रिम फिगर बनाना है, जैसे यहाँ पे मैंने रेड में दिखाया हुआ है. तो आपको वो अनब्रोकन राइस से श्रिम बनाना है. एंड you can can cover the whole plate if you like, but make a clear image. उसके वो प्लेट में ही आपको एक गाय का घी का दिया जलाना है. दो दिया अगेन हैज टू बी ऑफ कॉपर, ब्रास और क्ले का. अवॉइड स्टील. Place this diya in the metal. So while and another thing is you have to put is that दो जो लौंग आती है ना, फुल लौंग जो फूलों के साथ लौंग आएगी, क्लोव, that you have to place in the diya. Within the diya you have to place it, uh, दो pieces. And while lighting the diya, make sure you inhale your breath. So because while inhaling is gives very positive vibrations. So this is the Swar vigyan, which I will cover some other day. But while doing anything auspicious, you always inhale. We also says that when you get the payment, you should inhale the notes that you receive. While inhaling and lighting the diya, you can think of the wish in the present tense. जैसे कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है. So anything positive affirmations you can think of while lighting the diya, making the Srim figure. Uh, Once you done that, then you have to chant two mantras, each mantra 108 times. पहला वाला जो मंत्र है वो है ओम श्री महालक्ष्मी नमः. वो 108 बार आपको जाप करना है. दूसरा है ओम क्लीं कृष्णाय नमः. आप कमलगट्टा की माला ले सकते हो या क्रिस्टल की माला ले सकते हो, या और फिंगर्स एज वेल गुड. So once this whole process is done and the diya has burned out, जो राइस है वो आप पानी में भिगो के आप एनिमल को खिला सकते हो. नहीं तो फिर फ्लोइंग वाटर रहेगा जैसे कि रिवर, वहाँ पे आप अर्पित कर सकते हो, जल प्रवाह कर सकते हो. अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपके वहाँ पे जो गार्डन रहेगा, गार्डन में किसी प्लांट के नीचे रख दीजिए.
That also good. But feeding animal is always good. But there are challenges in certain cities, as well as finding the river. So the third options you can go for. Uh, I hope and I wish you guys a very happy Guru Pushya Nakshatra. आई एम श्योर दिवाली के पहले भी एक वीडियो होगा, बट अगर नहीं हुआ तो विशिंग यू गाइस अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस नया साल. Thank you very much, friends. Please do like, share, and subscribe our channel so more people can benefit. Thank you. Thank you very much.